गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और जो प्रीवियस क्लास में बताया गया था वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। लाइक एसएपी, व्हाट इज एसएपी, हाउ द जर्नी ऑफ एसएपी रीच फ्रॉम R/2 system to SAP S/4 HANA. So today basically we will learn what is the digital core component. So as we know, SAP stands for System, Application and Product in a database. So today, let's see the release strategy and components which has been taken care by the German company. So first version of SAP S/4HANA came in 1511 as we have seen in last classes. Second version came in 1610. So 1511, it is first one nomenclature is YYMM. It means the first version of SAP S/4HANA came in November 2015. Second version came in October 2016, then September 2017, then September 2018, and so on till 2019. But from the 2020, this nomenclature has been changed, and how what happens? Let's see. In the first and second quarter, they used to release the feature packages (APS). In the third quarter, they use to give the general availability of the version, and in the fourth quarter, they used to release the new functionality along with any bug fixes. Like whatever the bug in a previous version, all the bug used they try to fix and release in the fourth quarter of the every year. It's a problem solution we can say. Now, after 2000, after 2019, they have removed the particular nomenclature that we have seen is that was YYMM to YYYY. Like year they have only considered from 2020. So data footprint reduction. This is what in a previous class. In a previous class we have seen हमने पिछले क्लास में भी देखा है कि whenever we were using a sidecar scenario, जब हम sidecar scenario यूज कर रहे थे तो उस समय हमारे पास फुटप्रिंट रिडक्शन हो रहा था जिसकी वजह से हमारा सिस्टम का जो परफॉर्मेंस था वो डिक्रीज हो रहा था ड्यू टू द मेमोरी इंक्रीजेस। मेमोरी इंक्रीज हो रहा था जिसकी वजह से सिस्टम का जो परफॉर्मेंस था, स्पीड था, वो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। तो इसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? डेटा फुटप्रिंट रिडक्शन, फर्स्ट वन इज कंप्रेशन, देन कॉलम स्टोर एंड एनी एट्रीब्यूट एज एन इंडेक्स। पहले हम कंप्रेस करते हैं, फिर उसके बाद कॉलम स्टोर तक कॉलम स्ट्रेटजी अपनाते हैं, देन एट्रीब्यूट लाइक कोई भी इंडेक्स यूज करते हैं जिससे कि हमारा फुटप्रिंट जो मेमोरी हो रहा है, यूज हो रहा है, वो मेमोरी डिक्रीज हो जाता है। अब ये कैसे प्रैक्टिकली होता है? इफ यू वांट टू नो यू कैन कनेक्ट विद अस। सो बेसिकली using the three concept compression, column store and any attribute as an index, these three concept we can use to reduce the memory up to 25%. Suppose in a traditional database we are using a 593 GB, so in a HANA database it will come to 118.6 GB. In this manner, the memory uses will be reduced if you will use the three concepts like compression, column store, and any attribute as an index. So let's see what is index. हम हम लोग भी कॉपी मेंटेन करते होंगे। तो कॉपी मेंटेन करते हैं, अगर हमारे पास इंडेक्स नहीं रहे और कोई टॉपिक को हमें ढूंढना है तो ढूंढने में काफी टाइम लग जाता है। अगर वहीं पे हमारा इंडेक्स बना हुआ है जहाँ पे हमने मेंटेन किया हुआ है कि इस पेज से लेकर के इस पेज तक ये टॉपिक हमें मिलेगा, तो वो क्या होता है कि हमारे टाइम रिड्यूस हो जाता है। किसी भी टॉपिक को सर्च करने में जो टाइम लगेगा वो रिड्यूस हो जाता है। तो सेम थिंग यहाँ, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी इंट्रोड्यूस है। इंडेक्स हेल्प अस टू सर्च एनीथिंग फास्टर
and in short time duration. In fact, it increases the data volume as well as the data footprint on a database, due to which load will increase on a database, and it happens in a ECC. ये ECC में होता था इंडेक्स का यूज करके हम लोग। तो इस तरीके से आपने समझा कि इंडेक्स बेसिकली है क्या। ये हमारे सर्चिंग कैपेसिटी को फास्ट कर देता है, ठीक है, और हमें रिजल्ट शॉर्ट टाइम में मिलता है इंडेक्स का, अगर आप यूज करते हो तो। बट द ड्रॉबैक इज data volume as well as the data footprint also increases, and it was happening in ECC. So in the later on classes we will see like how the index, all the things has been changed in S4 HANA. So first thing, index we have seen. Next one is column storage. Suppose you have stored some data in a row wise. In a row wise, here you can see here. Here you can see the data I have written in a column wise. Column wise. So if we have to search anything, we can get the result faster. But what will happen in a raw data? In a If we store the data in a raw data structure, how it will look like? 1001 it is plant, product, how much, plant, plant, company, product, quantity, plant, sorry, plant, product, plant, company, product, and it is a quantity in same manner. Suppose if we have written the data in this manner in a row wise, so it is difficult to search or to get the result. It will take a lot of time if we will write the data in a raw data structure. If we will store the data in a raw data structure, it will take a lot of time to give the result. If we have to see the result faster, then we need to store the data in a column data structure. So in that way, column store only unique values in a column data structure. We used to store the unique values. Like how we store the unique values, we will see also. Store only in numerical form. Only we store the data in a numerical form. Using unique value, we can save spaces and compress data, because the number and name write more than once, it will not write. In this manner, space will be saved. सपोज कीजिए कि मैं कोई डेटा लिख रहा हूँ, अगर उसको मैंने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिख दिया, अगर मैंने उसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिख दिया और सबका एक यूनिक वैल्यू दे दिया, तो उससे हमारे पास बेनिफिट क्या होंगे कि स्पेस जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही स्पेस रिड्यूस होगा हमारा स्पीड और परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्टेड इंडेक्स कॉन्सेप्ट। तो इन्वर्टेड इंडेक्स क्या आया? जो हमने इंडेक्स देख रहा था वो हमारा क्या आ गया? अब इन्वर्टेड इंडेक्स कॉन्सेप्ट में चेंज हो चुका है। तो इन्वर्टेड इंडेक्स कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? तो हम समझते हैं इसको। सिस्टम विल असाइन अ डिक्शनरी वैल्यूज to the data over here, and each line item will be having a record ID and having a numerical value. So store the data in a numerical format which has been assigned in a dictionary, like order जो हमें मिल रहा था वो हमने इस तरीके से, जैसे हमारा रो 1 था, रो 2 था, रो 3, 4 फॉर्मेट में हमने लिखा था। प्लांट हमने दिया था तो रो 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। कस्टमर हमारा कौन कौन सा था हमने देखा था, वहां पे अमेजन था और वॉलमार्ट था। तो अमेजन और वॉलमार्ट हमारी दो ही कंपनी थी, तो फिर हम 4 जगह क्यों लिखे? तो इसीलिए मैंने 2 जगह लिखा, और कौन कौन से रो में अवेलेबल था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। लाइक मैं अमेजन की बात करूँ तो अमेजन जो है वो रो 1 में और रो 3 में अवेलेबल था, तो हमने एक साथ कर दिया।
फिर वॉलमार्ट रो 2 में और रो 4 में अवेलेबल था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। जब आप कॉलम डेटा स्टोर करते हो, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पे मेमोरी reduce होता है, yeah, and all the data is stored in the backend. In this manner, we used to write the column data structure. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होंगे। Now next one, speed is increased if we search any data, then it directly search from the library. And S4HANA, in S4HANA basically, it has an inbuilt index. A mapper should not try to include any index externally. If we do so, data volume will be increased. एवेपर जो एवेपर बेसिकली है क्या, यहाँ पे एक प्रोग्रामर है जो कि कोड राइट करता है, तो उनके लिए उनको एवेपर को कोई भी इंडेक्स इंक्लूड नहीं करना चाहिए एक्सटर्नली, बिकॉज इट विल इंक्रीज द डेटा वॉल्यूम एंड इट विल रिड्यूस द परफॉर्मेंस एंड स्पीड। सो queries multiple queries are asked in inverted index or column data structure. The time taken will be less and performance will be very much improved. How performance will very much improve? Because we have decreased the data volume using the three concepts like compressed, second one was column data structure, and third one was attribute as an index. In this manner, we have seen the digital core of the S4HANA. So that's it for today. Thank you very much. And we are moving to the increased skill that is very much usable in a manufacturing industries all over the world. So that's it for today. Thank you very much. Bye bye.